everyone. Today, I, Arushi Chaudhary from Ambition Law Institute, is here to tell you something on law subject as an optional in UPSC. जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की तो कहीं ना कहीं माइंड में एक फियर होता है दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट व्हेन देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन इन दिस एग्जाम प्रेजेंटली. द थ्योरी ऑफ यूपीएससी जो आज हम एग्जाम यूपीएससी की बात करते हैं तो आज से 5 या 7 साल पहले या इफ आई टॉक अबाउट 10 years बैक तो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना was somewhere comparatively easier which is not today. आज के डेट में यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना स्टूडेंट्स को लगता है इतना इजी नहीं है बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंपटीशन. बट I say that if you opt for the correct strategy to clear the exam, that what to study, how to study, what all things need to be studied in exam, and what all areas are important for exam, then it becomes quite easy. The things doesn't remain difficult. If you know कि आपको क्या पढ़ना है, then you can very well prepare for it. हम बात करते हैं कि जब यूपीएससी का एग्जाम है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, देन यू फाइनली क्लियर द इंटरव्यू एंड देन यू नो दैट द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द लबासना where every aspirant is sent for the training. But let me tell you that that is not the single glimpsing part of UPSC exam. That training period is golden for every student, every aspirant who goes to Labasna because somewhere it is every person's dream to go there. But let me tell you, let me share with you, my friends, that after clearing UPSC, the real journey begins. Because the post for which you are fighting for, when you are aspiring to become IAS, IPS, IRS, IFS, and many other posts, many other positions which you will be getting after clearing the UPSC exam, the journey, the real journey will begin after that. The real journey will begin after once you clear the interview. So now as the preliminary exam is done, now it comes on the mains. And when we talk about mains examination, it really becomes important for us to know that how to attempt and how to write in mains examination. And if I move on to mains examination in UPSC, it contains 9 papers in UPSC mains examination. You have to appear for 9 examinations, 9 papers. And in 9 papers, there are 2 papers of law optional, paper 1 and paper 2, which will be of total 500 marks, 250 marks each. तो जब हम लॉ ऑप्शनल की बात करते हैं in UPSC, because there are around 48 law optional subjects in UPSC. So when I talk about the law as an optional subject in UPSC, it is very good decision if you opt law as an optional subject. Now the question comes, why law as an optional subject? Why not other subjects? But I completely agree that sociology, polity, the language subjects, every subject has its own importance. You can opt any subject as an optional in your UPSC exam, in your UPSC mains exam. But why law? Why you should opt law? Let's move further. Firstly, if I say that why law as an optional subject in UPSC examination, then I should tell you this thing that some students have fear in their mind that if you will study law, अगर हम law पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं it will take our more time and we won't be able to focus on the GS papers. GS के 4 papers होते हैं, GS1, GS2, 3, 4. तो उन्हें ऐसा लगता है, students feel that part that if we will prepare for the law optional, somewhere our time will be divested in law more and we won't be able to focus more on the GS papers, which is not true. Which is not true. अगर आप law optional की तैयारी करते हैं, and there is a myth, that a student of law background can only select law as an optional in UPSC, which is not true.
any aspirant who wants to study law, who wants to take law as an optional in UPSC can take it. इसके लिए आपको लॉ बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, बट येस दिस इज ट्रू एंड दिस इज अ ट्रुथ दैट इफ यू हैव अ लॉ बैकग्राउंड देन यू विल फाइंड इट easy to prepare. But what about those students? What about those aspirants who are not from the law background? Can't they opt it? Can't they choose it? So this is not so the case. Even if you are not from the law background, even if you have not studied the law in your graduation time and you have no idea about what law is and what are the subjects, what are its integrities, then no matter, no issue. You can prepare for it very well. You can take help of books, you can take help of good coaching institutes. You can prepare for it. You can get an idea, you can get an guidance that how to prepare for it. We also at the institute, Ambition Law Institute, guide students, prepare students for the UPSC law optional. But in fact, in the batch itself, there are so many students who are not from the law background, but they are preparing so well that they can score good marks in law optional. So it is, firstly, you need to clear this myth that any person who is not from the law background can also opt law as an optional in UPSC. वो भी लॉ कर सकता है, पढ़ सकता है. इनफैक्ट आई फील दैट एवरी पर्सन शुड स्टडी लॉ. Every person should know the law of his land, because we say that we in the India, in the democratic country, we say that the law is supreme and no other person. हमारे देश में लॉ ही सबसे सुप्रीम है, तो फिर क्यों ना लॉ को पढ़ लिया जाए? क्यों हम ये सोच रहे हैं कि लॉ बहुत मुश्किल है या लॉ की इंटेग्रिटीज इतनी है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इट इज अ very technical subject and we won't be able to study and read those terms. कुछ ऐसे शब्द जिससे सब घबराने लग जाते हैं. प्राइमा फेसी, what are the things, what are the legal maxims, what are the Latin phrases. इससे डरना क्यों है? ये डरने की तो चीज है ही नहीं. If you have the right guidance, if you have the right approach, if you have the right strategy, अगर आपके पास right strategy है, then you can do wonders. ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते. और जब मैं बात करती हूँ जीएस पेपर्स की, GS1 which is all inclusive of the history and geography, then हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भले ही लॉ का बहुत ज्यादा रोल ना हो, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने आप में एक अलग पैरामीटर लेके चलते हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द जीएस पेपर 2, इन जीएस पेपर 2 you have you have to study polity, governance, and constitution. So, in GS paper 2, you are reading polity, governance and constitution, and what the constitution is and what the polity is. It is all related to law. So, preparation of law is nowhere overlapping with the GS. Rather, it is enhancing your preparation of GS paper 2, because you are already studying their polity, governance and constitution. And when you read constitution, fundamental rights, directive principles, union, state, judiciary, center-state relations, financial relations. So everything is law only. It is nothing different. And when we read about the constitutional history, when we read about the different acts starting from the Regulating Act 1773, then the Pitt's India Act, Government of India Act, Montagu-Chelmsford reforms, Morley-Minto reforms, every act, what it is legal history. So if you prepare law as an optional in UPSC, it is going to enhance and help you in your GS papers too. Because we need to see and we need to analyze that why we should opt law as an optional in UPSC. That is what our question was and that is what we are discussing here. So if you are going to if you are going to choose law, then it is going to help in your GS papers too.
because in that you will be reading and studying polity, governance, and constitution. And there was a question asked in the GS second paper. A question was asked that what is your say of representation of women in higher judicial services? This question was asked in the GS paper too. So the representation of women in higher judicial services. So for that, don't you know, or don't should you not know that what the appointment is all about? And for the appointment you need to study the constitution only, that how the appointment takes place, what is the procedure for appointment, what is the percentage decided for the representation of women, how much seats are reserved, what is the policy of reservation. Everything you need to switch on to the constitution to analyze this topic, that what the representation of women, and in the topic of representation of women, what should exactly be written in the examination. So for that also you are somewhere reaching to the constitution only. A question was asked that what is the impact of CBI on the federal character? And to know and study about the federal character, the unitary character, again you need to switch on the Constitution of India. That what is the unitary feature, what is the federal feature, what is the quasi-federal thing. We say that India is a quasi-federal state as stated by K.C. Weir. So for that you need to switch on the constitution. You need to know that what are the unitary features, what are the federal features. And I'm again saying you this line that these questions have not been asked in the law optional. These questions have been asked in your GS paper too. In the previous year papers, these questions have been asked. So if you are writing very well on these questions, because you need to frame your answers in such a manner that their representation should be such that it attracts the mind of teacher while checking your paper, that yes, the student has written so many relevant points, he has connected the issue with the current issue. Because any person, any aspirant who is preparing for UPSC, who is preparing for the mains examination, must be well versed with the current events and legal news, that what all is going on. Because you need to connect with the legal issues, you need to connect with the current affairs, that yes, because your answer reflects that you are well versed and updated with the current news and current affairs. आप वही ट्रेडिशनल नोशंस में आंसर लिखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कंसेप्ट था, दिस वाज द फिलोसॉफिकल व्यू, दिस वाज द नैरेटिव व्यू, एंड दिस वाज सेड बाय दिस फिलोसोफर, दिस वाज सेड बाय दिस ऑथर. एवरी पर्सन नोज अबाउट इट. ये तो सबको पता है. एवरी पर्सन नोज अबाउट इट. इवन द टीचर नोज कि अच्छा ठीक है, यही तो आंसर का फ्रेम है और यही बुक में लिखा है और यही आपने भी लिख दिया है. देन व्हाट इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? हाउ यू विल गोइंग टू स्टैंड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग? आप किस तरह अपने आप को दूसरों से अलग बना रहे हैं? आपको अलग बनाना है अपने अलग आंसर्स लिखकर. When you will be writing the new points, new legal advancement, new case laws, जब आप नए केस लॉज लिखेंगे, जब आप नई बातें लिखेंगे, आप इश्यूज को कनेक्ट करेंगे कि दैट यस दिस वाज इन द इशू. इफ यू आर राइटिंग ऑन कैपिटल पनिशमेंट, यू आर राइटिंग द न्यू केस लॉज, देन द टीचर विल कम टू नो दैट यस यू आर वेल versed and updated with the current affairs. Because law is dynamic, it is not stagnant. It keeps on changing with the recent times. Things keep on coming, and the new updates come, new amendments come. So every day we come up with a new point on law. Now if I talk about the recent issues, आज की डेट में recent issues में we are well versed with this point if you are preparing for the UPSC, and all those who are watching my video. आप जानते हैं कि आज की डेट में सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी, hurting the religious feelings, hate speech, natural justice and opportunity, that how much opportunity should be given to a person to clarify his points, death sentence, marital rape, if we talk about IPC, then everything is going on in the news. So if any question comes up in your essay, because essay is also a paper, so if any question comes up in your paper which is so connected with the law, then it is ultimately going to help you write better than the others. Because you know the law point, you know the legal point, you know the legal framework, and then you are connecting it with the recent advancements. मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका आंसर कुछ भी और
रिक्वायर करता है, क्योंकि जब आप उसमें करंट एडवांसमेंट्स, the recent affairs, जब आप सब मेंशन कर देंगे and you will connect the answers in such a manner that it looks beautiful to the examiner, कि एग्जाम में आपने जो आंसर लिखा है कि किस तरह से टाइली, किस तरह से ब्यूटीफुली नोट किया, बिकॉज इट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आप जिस तरह से लिख रहे हैं, दैट हाउ यू आर कनेक्टिंग द डिफरेंट डॉट्स, starting from the history, then the introduction, why in recent news, and what should exactly be the way out, the way forward. So that makes the examiner think of you that yes, this person is suitable to be selected in UPSC examination. क्यों हमें इस पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए? और ये बात हम सब जानते हैं, और मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी में इंटरव्यू से पहले मेंस की जो आपकी मार्किंग होती है, मेंस के जो स्कोर्स होते हैं, इट रियली क्रिएट्स इम्पैक्ट इन इंटरव्यू। ऑल्दो इंटरव्यू आपका एक डिफरेंट लेवल है, एक डिफरेंट स्टेज है, बट इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन, देन इट समवेयर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू, एंड इट समवेयर सिक्योर्स you in the selection process also. इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनालिटी चेकअप, और जब हम इंटरव्यू में बात करें लॉ ऑप्शनल की, तो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन, if you are from the law optional background and if you have selected law as an optional in UPSC, they can ask you that what are your views on the recent things which are going on in our country, what are your views on the arbitration, how do you think that arbitration is really helping the courts in solving the disputes. Kindly let us know with the 5 negative and 5 positive points. Now you cannot tell them that yes, these are the 5 points and these are the 5 points, because that are already stated in books. हर बुक में होता है ना that these are the 5 positive points, these are the 5 negative points, but you have, आपको वो ट्रेडिशनल लाइंस उनको इंटरव्यू में नहीं बतानी है. If you are sitting in the interview, if such a question has been asked to you, if such a question is asked to you from the interviewer, then you need to tell that yes, from the recent time, in the recent times, as we are globalizing ourselves, as there are technical advancements which are taking place globally, not in the India itself, in every country, we are updating ourselves with the technological advancements. And recently in April itself, or yes, in April itself, the CGI, Chief Justice of India, N.V. Ramanna, felicitated the conference, international conference on arbitration in Dubai. So you need to speak those lines which he said while felicitating that event, while felicitating that conference. Because then only the interviewer will come to know that yes, you are well updated with the new news. You are well updated with the recent news. You are well updated with the recent advancements. अच्छा, आपको ये भी पता है कि उन्होंने क्या उसमें पॉइंट्स रखे थे? उन्होंने कहा था that yes, ADR is a process which need to be established globally as we are technically advancing ourselves, as we are saying that we are globally connected. Because after the concept of globalization, we are connecting the countries, we are interconnecting the countries at every level. So ADR is also an area which need to be developed. And after the era of COVID-19, we have felt that yes, the burden of cases, the number of cases which are pending in the courts can be reduced by the method of alternative dispute resolution and even the online dispute resolution, ODR. So if you will say these new terms before the interviewer, then he will get to know, or she will get to know, that yes, he or she is the person who should be selected in UPSC. Because if you are going to write and speak those lines only which are already written in every ABC books, because every author writes very well in their books. So if you are going to write the same, then how it is going to make you different from others, how it is going to give you more marks than the others. उसके लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी, अलग अप्रोच से चलना होगा. You need to pick the right strategy, right approach. You need to be clear. There should be a clarity that how, when, where, from where, what all material I have to select. किन बुक्स को मुझे पढ़ना है, किन मटेरियल्स को मुझे अवॉइड करना है. तो दिस आर द थिंग्स
जो आपको कन्विंस करती हैं या जो आपको ये समझाती हैं दैट व्हाई लॉ शुड बी टेकन एज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी. Even if I talk about the paper number 3, GS paper number 3, then you have technology, biodiversity, environment. These are the subjects. So for the technology, don't you need to study the Information Technology Act, cybercrime, contemporary legal developments? उसके लिए भी आपको लॉ ही पढ़ना है. If I'm talking about the environment, then the international law need to be read, that what different bodies have said on different treaties. क्या treaties हुई हैं, क्या global index बने हैं, what all global indexes have come, what all recent reports have come, and for that you have to read the international law, and international law is also a law. So you have to study law. And if I talk about GS paper 4 also, I have discussed with you GS paper 2 and 3 and how it is connected with law. And if I talk about GS paper 4, which is about the ethics, integrity, and aptitude, then also, because in ethics you get the case laws in the sense you get the case studies. आपकी उसमें साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट एज एन ऑफिसर. आप उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे. इफ यू आर एट दैट पोजीशन, अगर आपके सामने एक ऐसी स्थिति, एक परिस्थिति आ जाए, तो आप उस परिस्थिति पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये प्रश्न आपके समक्ष आ जाता है. आपका निर्णय, आपकी सोच, आप किस दिशा में जाके उस निर्णय को लेते हैं, ये सब आपके एथिक्स में जज किया जाता है, आपकी इंटेग्रिटी, आपके एप्टीट्यूड में टच जो है चेक किया जाता है. तो जब हम एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तब भी आपको the concepts like constitutional morality, that what an officer must adopt in such a situation. What are the historical things which officers have adopted? The administrative law, what are the theories which the thinkers have given, which the philosophers have given, that if someone is administrating, if he is an administrator, then what policy he should actually adopt. Because you need to read the theories कि किस तरह से निर्णय लिए जा सकते हैं. At least you need to know the theories, because the reality is a different thing. कि आपके समक्ष एक रियल रियलिटी है, एक रियल सिचुएशन है और आप उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. लेकिन उसके लिए भी तो आपको थ्योरीज जाननी जरूरी है कि अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज क्या आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. For that you need to read the and study the administrative law, and that is also a part of law. तो अगर आप लॉ ऑप्शनल लेते हैं और आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है और कोई भी चिंता की भी बात नहीं है, क्योंकि लॉ ऑप्शनल की तैयारी 4 to 6 मंथ्स में बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती है विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच. एंड यस, द गाइडेंस वर्क्स अ लॉट. अगर आपको राइट गाइडेंस मिल जाए कि किस समय क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस मटेरियल से पढ़ना है और किस मटेरियल को अवॉइड करना है, तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, वो और इजी हो जाती है. इट बिकम्स इजियर. आप 10 बुक्स लेके बैठ जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है. If you are reading 10 books simultaneously and you are getting nothing out of them, then it is of no use. But if you are reading a single book 10 times, then it might help you. It will help you, in fact. वो आपकी मदद करेगी, because you have studied the same content 10 times and now you are having that content in your mind and now you have to portray that in the examination. You have to put before that content. So you can easily do that. So when I talk about paper 1 in law optional, it consists of 3 topics: the constitutional law, admin law, and international law. The law paper 1 is moreover theoretical. The constitutional law, the administrative law, and the international law, all these topics are theoretical. इसके अंदर कुछ भी प्रोसीजरल, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है. इसके अंदर आपको केस लॉज, द न्यू एडवांसमेंट्स, द लीगल थ्योरीज, इन सबको पढ़ने की जरूरत है.
जो कि मैंने आपको बताया आपके जीएस पेपर्स में भी हेल्प करती है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार किस तरह से आपका जो लॉ सब्जेक्ट है वो आपके जीएस पेपर्स में भी आपकी सहायता करता है, जीएस पेपर्स में भी आपकी हेल्प करता है। तो जब आप लॉ ऑप्शनल पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट इज असेंशियल। आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, लेकिन बेयर एक्ट क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी इतना मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि कुछ मटेरियल इस तरह से बनाया जाए कि आप उसको इजीली पढ़ सकें। आपको एक कंसाइज फॉर्म में एक मटेरियल इस तरह का मिले दैट you read that material again and again, revise it again and again, and then you are ready for the examination. But what exactly bare act here means, it means what the legislature is trying to say to you. लेजिस्लेचर क्या कहना चाहता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 12 स्टेट, देन द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप रीसेंट केसेस जानेंगे, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें अडल्ट्री को स्क्रैप कर दिया गया, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें 377 सेक्शन 377 आईपीसी को कहा that it is unconstitutional। आपको केएस पुट्टस्वामी का केस पढ़ना होगा, that privacy, right to privacy is a fundamental right। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर्स लिख रहे होंगे तो आपको ये रीसेंट केसेस, रीसेंट एडवांसमेंट्स पढ़ने जरूरी है, क्योंकि वही आपके आंसर्स को बेहतरीन बनाएंगे और वही आपके आंसर्स को एग्जामिनर की नजरों में ये बनाएंगे कि हाँ इस बच्चे ने तैयारी बहुत अच्छी की। आपने प्रोविजंस जान ली, आपने रीसेंट एडवांसमेंट्स जान ली, आपको हिस्ट्री पता है, what else is needed? कुछ भी नहीं। तो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब आप किसी भी एक्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए मेन पार्ट बन जाता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं और किन एरियाज को आपको अच्छे से तैयार करना है, किन एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जब आप कोई भी पेपर की तैयारी करते हैं, फिर चाहे वो जीएस पेपर हो या लॉ पेपर हो, यू नीड टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट फ्रॉम व्हाट ऑल एरियाज द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड and repeatedly asked, because there can be many areas जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। If I talk about the history, मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं as compared to medieval इंडिया। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही जान पाएंगे ना कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो लाइकवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं और किस तरह बन रहे हैं। आपको कैच करना होगा अच्छा क्वेश्चन इस डोमेन से ज्यादा आते हैं, इस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और दैट टू लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स। क्योंकि अब जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, दे आर यूजुअली आस्क्ड इन कनेक्शन विद द करंट अफेयर्स। तो जो भी आपके करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं इन द पास्ट 1 or 2 years, जो केस लॉज आए हैं, जिन जिन एरियाज पे केस लॉज आए हैं, उन एरियाज को आपको बेटर प्रिपेयर करना होगा। if there was the questions on judicial appointment, अगर judicial appointments in पिछले दिनों में, इन पास्ट डेज में बहुत ज्यादा हुए हैं, then you need to study about the appointments from the constitution कि what is the appointment procedure, how the appointment takes place, when the appointment cannot be done, who is to appointed, who can appoint, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए because it is somewhere related with the current affairs। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको प्रेजेंट सिनेरियो में जो सिचुएशंस, जो करंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उनको देखते हुए अपने स्टैटिक पोर्शन की तैयारी करनी है। एंड व्हेन आई मूव फर्दर, so these are the important areas from where the question comes: fundamental rights, directive principles, emergency, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, एवरीवन स्टडीज। तो जब हम बात करते हैं इन एरियाज की, तो दीज आर दी एरियाज विच कैन गिव यू द मैक्सिमम एडवांटेज इन द लॉ ऑप्शनल पेपर। देन फर्दरमोर, पेपर नंबर 2 is
related with law of torts and crimes and mercantile law and contemporary legal developments. तो tort में भी law of torts जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें थ्योरीज पे ज्यादा ध्यान देना है. What were the theories? जब क्वेश्चंस की बात आती है तो टॉर्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड स्टेट लाइबिलिटी से पूछा जाता है. दैट एरिया नीड टू बी प्रिपेयर्ड वेल. तो जब तक आप पीवाई क्यूज नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको इसमें पढ़ना क्या है. व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी स्टडीड. दीज आर दी एरियाज जो आपको पीपीटी में दिख रहे हैं, स्लाइड्स में दिख रहे हैं. आप इसकी तैयारी कर लेंगे बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट इनफ. लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बात समझनी होगी कि स्ट्रैटेजी कभी भी किसी की भी फॉलो नहीं की जाती. आप किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी टॉपर्स ऑन द यूट्यूब who shares their strategy, मगर आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते because you are different from others. You need to create your own strategy, you need to prepare your own strategy and tricks कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर करेंगे. आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते. आप किसी भी टॉपर की स्टोरी सुन लीजिए, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, जान सकते हैं. हम ये कहते हैं ना कि आपको दूसरे की बात पता चल जाएगी तो आप अपने लिए वो चीजें अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है, इससे इसको ये नुकसान हुआ तो दैट आई कैन अवॉइड दिस. अभी कोई टॉपर कह रहा है कि नहीं आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो यू कैन कीप दैट इन माइंड. बट स्ट्रैटेजी तो आपको अपनी बनानी पड़ेगी. दैट यू नीड टू मेक ऑफ योर ओन. देन तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपको जो मेनली पार्ट होगा वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी, नाउ दी विसाख केस जो 2020 में आया. और अभी मैं आपको बताऊं कि 2022 में भी एक जजमेंट आया है ऑन द एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें मैकडॉवल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड को एक्सप्लेन किया गया है. तो जब आप ये जजमेंट अपने आंसर में लिख देंगे तो एग्जामिनर तो खुश हो ही जाएगा. हाँ, इस बच्चे को सब पता है. द एस्पिरेंट नोज एवरीथिंग. जब आप उस एक्ट ऑफ गॉड जो उस केस में जज ने एक्सप्लेन किया दैट देयर शुड बी नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, 2022 की जजमेंट आपने अपने आंसर में लिख दी, देन व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड. यही सब आपके आंसर को बेहतर बनाएगा. ये कंसेप्ट्स तो सब लोग पढ़ जाएंगे, वाइकेरियस लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफॉर्मेशन, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस and everyone will read it, everyone will study it properly because competition है तो everyone will do their best. लेकिन उस बेस्ट में से भी बेस्ट कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा. यहाँ पे हम बुक्स पे भी काम जो करते हैं, देयर आर दी एम्बिशन पब्लिकेशन बुक्स, जिसमें हम बेयर एक्ट्स निकालते हैं. और उस बेयर एक्ट में भी आई एम शेयरिंग दिस व्यू विद यू ऑल दैट जब वो बुक्स निकलती हैं तो उस बुक्स में भी प्रयास यही रहता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है तो उसको सारे रीसेंट केसेस, सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या आए हैं, क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, वो सब उसे एक जगह कंपाइल्ड मिल जाए. फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हो, आईपीसी का बेयर एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स का बेयर एक्ट हो, पार्टनरशिप का बेयर एक्ट हो, कोई भी बेयर एक्ट हो, उस सब बेयर एक्ट में यही प्रयास रहता है कि आपको रीसेंट एडवांसमेंट्स का पता चल जाए. क्यों क्यों हम हर उस बुक में यही प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि यही तो आपको अलग बना रहा है सबसे. अब उसमें भी ये बात है कि जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब भी एक लेवल ये आता है कि वो बच्चा उस चीज को पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है. दैट एस्पिरेंट इज स्टडिंग दैट पोर्शन और नॉट. मटेरियल तो मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन क्या सब आईएएस बन जाते हैं, सब आईपीएस बन जाते हैं? कौन उस मटेरियल को पढ़ रहा है, ये भी एसेंशियल है, ये भी नेसेसरी है. किस तरह पढ़ रहे हैं? क्या हम मल्टीपल सोर्सेज में तो फ्लिप नहीं कर रहे हैं? हम एक ही मटेरियल को जब बार बार पढ़ रहे हैं तभी हमें वो गेन होगा, हमें वो समझ में आएगा. आपको यू नीड टू अवॉइड द मल्टीपल सोर्सेज, you need to avoid the multiple sources, then only you can prepare well. And there is a line which I always say in the class also, that
Don't count hours. For how many hours you are studying doesn't matter. Don't count hours. Instead, produce hours. आप उस 1 घंटे में कितना आउटपुट निकालते हैं ये मायने रखता है. Don't count hours. If you are sitting for 15 hours, 14 hours and studying whole day, and if you are bringing no output from it, it is not making any sense. But if you are studying only for 3 to 4 hours or even for 2 hours, but you are studying with full attention, full dedication, with full concentration, then the output has to come. तो आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए क्वांटिटी से ज्यादा. डोंट काउंट आवर्स, प्रोड्यूस आवर्स. इफ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours, study for 6 hours properly with full dedication and concentration. PYQ क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारी भी वेबसाइट पर है, आप उससे भी देख सकते हैं. एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, उसपे सब पेपर्स अवेलेबल है. You can see the previous year papers, but you have to avoid the multiple sources. Select one material and start preparing for it. And remove this myth that any person who is not from the law background cannot prepare for the law optional, because the institute helps in this area only. That if you, because जो law की जानकारी रखता है वो शायद prepare कर लेगा, फिर भी उसे गाइडेंस की जरूरत होती है, तो बच्चे आते हैं, students come, aspirants come. But if you are not from the law background, don't feel that you cannot prepare for law optional, because if you are going to opt for the law optional, it will be beneficial for you in GS papers too. So if you select that, it will be a wise option for you and you will be doing wonders in your paper. So don't get influenced by what others are doing. You have to create your own strategy. You have to create your own plan, and you have to decide the best for yourself, because no one can decide the best for yourself. You yourself can decide what is best for you, because you know your strengths, you know your weaknesses. So today, my conversation, जो मेरा ध्येय था, मेरा उद्देश्य था आज आप सबसे बात करने का, इस वीडियो को बनाने का, वो यही था कि लॉ ऑप्शनल क्यों हमें चूज करना चाहिए और लॉ ऑप्शनल किस तरह आपके जीएस पेपर्स में भी हेल्प करता है, और लॉ ऑप्शनल क्यों आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है मेंस पर्सपेक्टिव से, मेंस के एग्जामिनेशन में. मेंस में लॉ ऑप्शनल की स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है. सो इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट लॉ एज एन ऑप्शनल, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लीजिएगा. इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस मत रखिएगा. आपको अपने लिए डिसाइड करना है, आपको अपने लिए बेहतर डिसाइड करना है, एंड नो वन कैन डिसाइड फॉर यू बेटर देन यू. तो टेक अ वाइज डिसीजन कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको पेपर देना चाहिए, एंड आई सजेस्ट दैट आपको लॉ ऑप्शनल से देना चाहिए, एंड व्हाई वो इस पूरी वीडियो में शामिल है. तो थैंक यू वेरी मच. इट वाज सो गुड टू टॉक टू यू ऑल. जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.